Let's review the first part of today's passage. The pervasive influence of digitalization has profoundly reshaped numerous facets of modern life, with education standing as one of its most significantly transformed domains. Once confined to physical classrooms and printed textbooks, learning now transcends geographical boundaries, offering unprecedented access to knowledge. This paradigm shift, accelerated by rapid technological advancements and global connectivity, has ushered in an era where information is readily available at one's fingertips, fundamentally altering traditional pedagogical approaches and student engagement models. Here is the next part. One of the most celebrated advantages of this digital integration is the democratization of education. Online courses, virtual libraries, and open educational resources have made high-quality learning materials accessible to millions who might otherwise have been excluded due to location, cost, or physical limitations. Furthermore, technology facilitates personalized learning experiences, adapting to individual student paces and preferences through adaptive software and AI-driven platforms. This tailored approach promises to address diverse learning styles, potentially enhancing comprehension and retention across various subjects. However, the digital transformation of education is not without its complexities and challenges. The digital divide remains a significant barrier, as unequal access to reliable internet and devices perpetuates educational inequities, particularly in underserved communities. Concerns also persist regarding the potential for increased screen time to negatively impact student well-being, attention spans, and critical thinking skills. Moreover, the sheer volume of information available online necessitates robust media literacy, as students must learn to discern credible sources from misinformation, a skill not inherently fostered by mere access. And the final part. Ultimately, the future of education in this digital age hinges on a balanced and thoughtful integration of technology. It is not merely about adopting new tools, but about strategically leveraging them to augment, rather than replace, fundamental human-centric teaching and learning processes. Educators must prioritize fostering critical thinking, collaborative skills, and genuine human connection, ensuring that technology serves as an enabler for deeper understanding and holistic development, rather than becoming an end in itself. This delicate equilibrium will define the efficacy of digital education. Question 1. Which of the following best expresses the main idea of the passage? A. Digitalization in education is primarily a negative development leading to increased inequities. B. The primary goal of digitalization in education is to replace traditional teaching methods entirely. C. Digitalization has transformed education, offering benefits like access and personalization, but also posing challenges that require thoughtful integration. D. The digital divide is the most critical issue in modern education, overshadowing all other aspects. I think it's C. बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। देखो, पैसेज में डिजिटलाइजेशन के फायदे भी बताए गए हैं, जैसे एक्सेस और पर्सनलाइजेशन, लेकिन साथ ही उसके चैलेंजेस भी हैं। इसलिए थॉटफुल इंटीग्रेशन यानी सोच समझकर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे ऑप्शंस या तो ज्यादा नेगेटिव हैं या फिर पूरा पैसेज का मेन आइडिया रिफ्लेक्ट नहीं करते। Q2. According to the passage, what is one of the most celebrated advantages of digital integration in education? A. It eliminates the need for physical classrooms. B. It ensures all students have equal access to devices. C. It democratizes education by making high-quality learning materials accessible. D. It reduces the overall time students spend on learning. I think it's C. बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ही सही है। पैसेज में साफ लिखा है ना कि डिजिटल इंटीग्रेशन का एक बड़ा फायदा ये है कि शिक्षा डेमोक्रेटिक बन जाती है। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल लाइब्रेरीज और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की वजह से हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल्स बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं। ए, बी और डी ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि पैसेज में उनका कोई जिक्र ही नहीं है या उनके बिल्कुल उल्टे बात लिखी है। Q3. The passage mentions that the success of personalized learning experiences is facilitated by which of the following?
A. Exclusive reliance on printed textbooks. B. Adaptive software and AI-driven platforms. C. Traditional lecture-based teaching. D. Reduced screen time for students. I think it's B. बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ही सही है। पैसेज में साफ साफ लिखा है ना कि टेक्नोलॉजी, अडेप्टिव सॉफ्टवेयर और एआई प्लेटफॉर्म्स की मदद से पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस को पॉसिबल बनाती है। ये सब इंडिविजुअल स्टूडेंट के पेस और प्रेफरेंसेस के हिसाब से एडजस्ट करती है। दूसरे ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक तो पुराने तरीके हैं और लेक्चर बेस्ड टीचिंग भी इससे ऑपोजिट है। स्क्रीन टाइम कम करना तो एक चिंता का बात है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग को प्रमोट नहीं करता। Q4. What can be inferred about the author's view on the role of technology in education? A. Technology should be adopted without reservation for maximum benefit. B. Technology is inherently flawed and should be used minimally in educational settings. C. Technology is a tool whose effectiveness depends on how it is strategically used and integrated. D. Technology's primary purpose is to make learning easier, not necessarily deeper. I think it's C. बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ही सही है। देखो, पैसेज में साफ लिखा है ना कि इट इज नॉट मियरली अबाउट अडॉप्टिंग न्यू टूल्स बट अबाउट स्ट्रैटेजिकली लेवरेजिंग देम। मतलब टेक्नोलॉजी एक टूल है, उसकी फायदा या नुकसान इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे इंटेलिजेंटली यूज कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि ब्लाइंड फोल्डेड यूज कर ले या बिल्कुल इग्नोर कर दे। स्ट्रैटेजिकली यूज करना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? Q5. The passage implies that mere access to online information is insufficient because A. It leads to excessive screen time, which is always detrimental. B. Students might struggle to differentiate between credible and unreliable sources. C. It discourages traditional classroom interactions. D. It makes education too expensive for many students. I think it's B. बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ही सही है। पैसेज में साफ लिखा है ना कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि स्टूडेंट्स को क्रेडिबल और अनरिलायबल सोर्सेज में डिफरेंस समझना आना चाहिए। सिर्फ एक्सेस होने से काम नहीं चलेगा, ये स्किल भी जरूरी है। दूसरे ऑप्शंस गलत क्यों हैं? ए, सी और डी ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पैसेज में ये डायरेक्टली मेरे एक्सेस से रिलेटेड नहीं है। समझ आया? Q6. As used in the first paragraph, the word pedagogical most nearly means A. Technological, B. Financial, C. Educational, D. Administrative. I think it's C. Educational. बिल्कुल सही, C. Educational ही सही जवाब है। देखो, पेडागोजिकल वर्ड पेडागोजी से आया है, जिसका मतलब होता है टीचिंग मेथड्स। तो पहले पैराग्राफ में फंडामेंटली ऑल्टरिंग ट्रेडिशनल पेडागोजिकल अप्रोचेस का मतलब है टीचिंग और लर्निंग के तरीके में बदलाव। दूसरे ऑप्शंस गलत क्यों हैं? टेक्नोलॉजिकल तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल पैसे से और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से। समझे? Question 7. Which of the following words is an antonym for augment as used in the last paragraph? A. Enhance, B. Supplement, C. Diminish, D. Expand. I think it's C. Diminish. बिल्कुल सही, सी डिमिनिश ही सही जवाब है। देखो, लास्ट पैराग्राफ में ऑगमेंट का मतलब था कुछ में और कुछ ऐड करके उसे बड़ा करना, तो डिमिनिश मतलब कम करना, वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इनहैंस, सप्लीमेंट और एक्सपैंड ये सब तो ऑगमेंट के सिनोनिम्स है, यानी उनका मतलब भी बड़ा करना ही है। Q8. What is the overall tone of the passage? A. Enthusiastic and celebratory. B. Skeptical and critical. C. Balanced and analytical. D. Indifferent and detached. I think it's C. It seemed pretty balanced. बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है C. Balanced and analytical. देखो, पैसेज में दोनों तरफ की बात है,
एडवांटेजेस भी बताए हैं और चैलेंजेस भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव दिखा रखा है, दोनों को इक्वल वेटेज दिया है और फिर बैलेंस्ड इंटीग्रेशन की बात करके कंक्लूजन निकाला है। इसलिए ये बैलेंस्ड एंड एनालिटिकल टोन है। दूसरे ऑप्शंस गलत क्यों हैं? ए, बी और डी वो सिर्फ एक ही साइड की बात करते हैं, पूरा पिक्चर नहीं दिखाते। Question 9. In the first paragraph, identify the grammatical classification of the phrase unprecedented access to knowledge. A. Adjective phrase. B. Noun phrase. C. Adverbial phrase. D. Prepositional phrase. I think it's B, a noun phrase. बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू नॉलेज, ये एक नाउन फ्रेज है। एक्सेस ये अपना हेड नाउन है, अनप्रेसिडेंटेड उसको मॉडिफाई कर रहा है और टू नॉलेज एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एक्सेस को और क्लियर करता है। पूरे फ्रेज का काम एक नाउन जैसा है, एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटेंस में ऑफरिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनके। दूसरे ऑप्शंस गलत क्यों हैं? एडजेक्टिव फ्रेज में हेड एडजेक्टिव होता है, एडवर्बियल फ्रेज वर्ब को मॉडिफाई करता है और प्रेपोजिशनल फ्रेज सिर्फ प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। समझ आया?